Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. Thank you, Rabi. Thank you, Imanshu. Audio video सब clear अच्छी ना? Very good. Thank you, Simran. Santosh, thank you. Hello and welcome to ADA 24/7. As you all know, I'm Professor Abhishek Tripathi teaching live for ADA 24/7. पिलामने आजिरा न्यूज सेशन को तमन को वेलकम करो चे इंटरेस्टिंग इंटरैक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव न्यूज सेशन को तमे जानी छो ऑलरेडी सुदान रे प्रॉब्लम चली छे इंडिया नेशनल्स मन को आनिबा पाई पूरा जिद्दोजहद करूचे इलेक्टोरल बैटल पाई मोदी केरला रे प्रिपेयर्ड मेयरल इलेक्शन पाई पुणी स्विच कलेनी साइड पोचिंग ऑन पोचिंग मन रखिबा पोचिंग माने होची किणा बिका करबा नॉर्मली एनिमल्स को केस लागिबो गवर्नर माने बिल्स ऊपर सिट करबा कथा नुए ऑलरेडी ए पार्टा आमे बहुत तरह डिस्कस करिछे गवर्नर्स केमिति डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट कर दउचंदी सर्कस कर पायोनियर जेमिनी शंकर कर डेथ जाइछे योगी आदित्यनाथ कहउचंदी माफिया और क्रिमिनल्स आउ एबेर थिंग ऑफ द पास्ट आउ एबेरे नांती ऑपोजिशन कहउचंदी कि माफिया आउ अंडरवर्ल्ड आसीबे कोटो तमे निजे तो माफिया आउ अंडरवर्ल्ड भलिया होउछ फेक एनकाउंटर करूछ तो आज डेट रो तमे ही माफिया आउ अंडरवर्ल्ड वी विल नेवर नो द ट्रुथ एटा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पिला माने pending bills the issue of gubernatorial inaction माने गवर्नर related gubernatorial related to government author होतंती PDT Achari former secretary general of the Lok Sabha the Tamil Nadu governor was again in the news recently when the Tamil Nadu assembly passed a resolution using the president of India among other things to fix a timeline for assent to be given to bills passed by the assembly तमिलनाडु गवर्नर पुणी न्यूज रे अछंती जोटी से गोटे रिजोल्यूशन पास कराइछि तमिलनाडु रे जोटी प्रेसिडेंट को कहैछि कि गोटे टाइमलाइन दियो केते दिन भीतर बिल जोटा तंपा को पठाउछि ऑलरेडी यार बैकग्राउंड भी तुमको कहैछि जदि सेकंड टाइम तुम ताको पठेबो एनी बिल तो सी बाध्य ताको देखिबा पई तमे काउंसिल करि परिबो विजडम रे तमरो तमे कहि परिबो
तमे मैक्सिमम टू मैक्सिमम तांको कोन करिवो ताको एडवाइस करि परिबो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड बलिया बट जदि ता परे भी समान ताको पठै देबे देन यू नीड टू साइन इट बट क्वेश्चन होची जदि तमे ताको पठैबो ही नाही विथ सजेशंस ताले सेटा गुडे डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट कर दोची. The immediate provocation for the resolution was the governor's public statement on April 6, where he implied that if the bill passed by the legislature transgresses constitutional limits, then it is governor's responsibility not to give assent. Governor कोन हला provocation हला केतबेले जेतबेले गवर्नर कहले जदि तमे एमितिया बिल पास करूछ तमरा कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट को ट्रांसग्रेस करूछ माने क्रॉस करूछ ताले गवर्नर ताको एसेंट देबेनी ताले क्वेश्चन कोन एटी क्वेश्चन होची पावरफुल की हे गले गवर्नर हे गले आमे गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल आमे कोउतरे अच्छे गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रे अच्छे आ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रे इलेक्टेड मेंबर बा लोकसभा बा तमरो इलेक्टेड मेंबर पावरफुल विधानसभा हो लोकसभा हो rather than तमरो governors की president. Several bills passed by the assembly have been pending as the governor has not made any decision. Relevant articles कौन passing a resolution by the assembly requesting the president of India to issue direction to the governor to ensure that he functions in accordance with the constitution is a new constitutional development. Article 355 of the constitution says that it shall be the duty of the union to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution. The general meaning and purpose of the article was explained by B.R. Ambedkar in the Constituent Assembly to provide justification for the invasion of the provincial field. B.R. Ambedkar Constituent Assembly रे explain करिसेंती कि invasion of the provincial field कोन हबो which the union government may have to do. But the constitution is a dynamic document whose concepts and doctrines have been interpreted and reinterpreted and also expanded by courts from time to time to meet the changing needs of the society. ए पार्टा को पिला माने देखिबो सदा बेले से कहउचंती कोन कि कॉन्स्टिट्यूशन रे जा प्रोविजन अछि ताको भी इंटरप्रेट करा जायछि रीइंटरप्रेट करा जायछि कोर्ट भी ताको एक्सपैंड करिसेंती तारो स्कोप को तारो मीनिंग को टाइम टू टाइम की चेंजिंग नीड्स एग्जैक्टली सेम सेक्स मैरिज रे कोर्ट एग्जैक्टली एया कहउछि कि तमरो मैरिज रो डेफिनेशन 1950 रे जा थिला से 2023 रे सेया रहइबो बोली किछि माने नाही. Although the article exactly सेया कहउछते कि जेतबेले कॉन्स्टिट्यूशन हेतिला सेतबेले मे भी गवर्नर एमती बदमाश नथिबे कि तमरो बिल ऊपर बसी पड़िबे माने सत्रे बसिबेनी म लिटरली नुहे ता माने इनएक्शन किछि करिबेनी you will be a passive you will remain passive ताले से माने कोन हबो टोटली जदी तमरो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कोनोसी नुवा रूल पास करि परिबे नाही काहे कि ना हमरो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अछि डेमोक्रेसी रो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे मैक्सिमम पावर हमें इलेक्टेड बॉडी को दउछे रादर देन सिलेक्टेड बॉडी बा नॉमिनेटेड बॉडी सच एज प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर्स. ऑल्दो दिस बा जोकर जारो डायरेक्ट इलेक्शन हो नाही. Although this article was meant to provide justification for central intervention, intervene kariba mane positively, interfere kariba mane negatively. Central intervention in the states, its scope and range needs to be widened. The constitution requires the governor to act upon a bill, to act when a bill is passed by the assembly and present it to him as per the options given in article 200. Tale कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर करूची गवर्नर को कि जतले बिल पास हबो तांको असेंबली जतले पास करबो तुमको प्रेजेंट करबो. इफ इट डज नॉट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिट्स ऑन द बिल इंडेफिनेटली से यदि इंडेफिनेटली ता पर लिंगर कर देबे ही इज क्रिएटिंग अ सिचुएशन
where government of the state cannot be carried on in accordance with constitutional provisions. In such a situation, the government of the state has a constitutional duty to invoke Article 355 and inform the president about it. जोटा तमिलनाडु एबे करिछि आर्टिकल 355 को करिके प्रेसिडेंट को इन्वोक करिछि and request her to give suitable instruction to the governor to ensure that the government is carried on in accordance with the constitution. आउ तांको रिक्वेस्ट करिछि काको द्रौपदी मुर्मू को request her to give suitable instruction to the governor to ensure that the government is carried on in accordance with the constitution. In that view of the matter, a resolution by the assembly should be considered legitimate action. जदि सेया हमें कहले ताले रिजोल्यूशन ता लेजिटिमेट एक्शन जो रिजोल्यूशन से माने पास करछते आउ नाही जदि प्रेसिडेंट ताकर नॉट बा अकॉर्डेंस दो नांती ताले इंडेफिनेटली से जिंसटा स्टॉल हे कि जिवो indefinitely seta delay hejibo. Article 200 provides option to the governor when a bill is presented to him after being passed by the legislature. These options are to give assent, to withhold assent, to send it back to the assembly to reconsider it, or to send the bill to the president for his consideration. Actually option kon अछि option एलाई तीनटा गवर्नर को जतबळे बिल दिया हबो सी आइदर राज्य हे जिवे कहबे बढ़िया अछि किछि टेंशन नाही पार्टी हो आजी बढ़िया बिल करछ बहुत करछ नॉर्मली आगुरु एमिथि होउतला बिल आसिला देखि न देखि साइन मार देले काइना कहले अरे तमे करछ बहुत किए करछ ना स्पेलिंग देखिबा दरकार ना ग्रामर देखिबा दरकार नॉर्मली गवर्नर आगुरु एमिथि फंक्शन करूतले बा तमे कोन करिवो तमे विथहोल्ड करिवो एसेट सेंड करिवो तांको रिकंसीडर करिबा पाई बा तमे सेंड करिवो प्रेसिडेंट को कंसीडरेशन पाई ए सबुडा प्रोसेस थिला किंतु एबे कोन होउची एबे ए सबु जिंस रे सिचुएशन पूरा डिफरेंट हे जाउची कोन डिफरेंट हे जाउची नीदर मु वापस करूची विथ माय सजेशंस नॉर मु प्रेसिडेंट को पठाउची नॉर असेंट दउची किछि भी मु करूनी मु चुपचाप तापर खाली बसुची ताको रखी दउची कबर्ड रे ताला पकेकी बॉय भितरे रखिला बलिया परे देखिबी कि ड्राइड लीफ बा ड्राइड फ्लावर थिबो. In case the assembly reconsiders the bill as per the request of the governor under the third option, जदि थर्ड ऑप्शन भाबरे से रिकंसीडर करिवो ताले तांको कहि परिबो रिकंसीडर करिबाको आउ समान जदि रिकंसीडर करिके मना कर देले कि नाही हमें कंसीडर करलु बट स्टिल वी फील दैट जा अछि सेटा बेटर ताले तुमको एक्सेंट दबा कोई पड़िबो to give assent even if the assembly passes it again without accepting any of the suggestions of the governor. Governor का suggestion no accept करिके जदि फेरा हला ताले भी से accept करिबा पई बाध्य सेहिति पई आमे कोन कहितिले कि प्रेसिडेंट कर गवर्नर कर टिटुलर पावर माने टाइटल खाली ना को मात्र actual power is enjoyed by the elected bodies. It is only logical to think that when the constitution gives certain options to the governor, he is required to exercise one of them. Since sitting on a bill passed by the assembly is not an option given by the constitution, the governor by doing so is only acting against constitutional direction. सेमाने कहउचंती कि चुपचाप तापरे बसिबा ठीक अछि चुपचाप तापरे बसिबा किछि ऑप्शन नथिला कॉन्स्टिट्यूशन तांको ए ऑप्शन ही दउनी से जेतु तांको ऑप्शन दउनी ताले सिटिंग ऑन अ बिल इंडेफिनेटली कोनोसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही नथिला अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट माने से करिवो डिक्लेयर करिवो ऑन दिस मैटर इज नीडेड टू एलिमिनेट द कंफ्यूजन. यूनाइटेड किंगडम रे कोन आइछि पिला माने एटा पक्का क्वेश्चन मल्टीपल जगह रे जेमते हाई कोर्ट एसो रे पक्का क्वेश्चन. As regards the option of withholding assent, a plain reading of Article 200 suggests that theoretically the governor can do so. Option of withholding assent, जोटी हमर ए पार्ट ता अछि कि withhold करि परिबो assent सेहिति पई तांकर जदि हमें plain reading करिबा ताले obviously एटा जणा पडुछि कि करि परिबे theoretically, but the question is whether the governor should withhold assent to a bill passed by the legislature. To answer this question, we may usefully turn our attention to the practice followed in the United Kingdom, whose model of government was adopted by our constitution. D.D. Basu in his commentaries on the constitution, ame London ro yeru kon kortile inspired heitile setur nei cheita. D.D. Basu in his commentaries on the constitution says the position of the governor in this respect is that of the sovereign in England. England re raja ki rani karo ja position
सेमतिया पोजीशन होउची सोवरेन रो प्रॉब्लम होउची in theory the sovereign can refuse to give his assent but this right has not been exercised since the reign of Queen Anne ताले आमे refuse करि परिबा किंतु Queen Anne का टाइम रो एमिति केही करि नाहंती the veto could now veto माने absolute power veto माने कोन absolute power तो मना करि परिबो जेमिति एबे कोन होउची सिक्योरिटी काउंसिल रो किछि भी एक्शन अगेंस्ट रशिया रशिया निजे विटो करूची चाइना भी विटो कर दउची तो सेति पई विटो होउची एब्सोल्यूट पावर जदि 5 जण परमानेंट मेंबर अछंती यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रो ताले जणे जदि कहबो 5 रु 5 राज्य हेले किछि हे परिबो जणे जदि मना करबो ताले हे परिबो नाही the veto could now only be exercised on ministerial advice and no government would veto bills for which it was responsible veto कोन करि परिबो मिनिस्ट्रियल एडवाइस रे हे परिबो विटो माने मना करबा से बिल को किंतु कोनोसी गवर्नमेंट केई विटो करबो जोटा को सी निजे पास कला refusal of royal assent on the ground that the monarchy strongly disapproved of a bill or that it was intensely controversial would be unconstitutional ताले जदि इंग्लैंड रे तांकर राजा की रानी मना करूचंती कि रॉयल एसेंट दोनांती मोनार्क बा सिंगल रूलर बा डिक्टेटर मोनो प्लस आर्क आर्क होची रूलर ताले सेटा कोन हबो कंट्रोवर्शियल हेजिबो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हेजिबो सो द question of crucial importance is whether under article 200 the governor can withhold his assent to a bill in exercise of his discretionary power ताले discretionary power बा own understanding रे से करि परिबे ना करि परिबे नि सेटा होची क्वेश्चन दीटा वर्ड पिला माने गोटे होची डिस्क्रीट डबल ई टी वाला ए डिस्क्रीट माने हिडन ए डिस्क्रीट माने सेपरेट तो सेइतरु आसिला एटा डिस्क्रिमिनेशनरी माने गोटे पोजीशन थ्रू रे जो सेपरेट बा गोटे पोजीशन पाई जो तमे पावर एंजॉय करूचो सेटा हला डिस्क्रिमिनेशनरी पावर of whether he can do so only on the advice of the council of ministers under article 154 of the constitution the governor can exercise his executive powers only on the advice of council of ministers ताले governor एई power को execute करि परिबे केतबळे withhold करबा को जदी council of ministers but council of ministers तो निजे ही पास करिथिबे से माने काई केमति करिवे so there is a view that the governor can withhold assent to a bill only on a ministerial advice but some expert ask us why the council of ministers should advise the governor to withhold assent after the bill has been passed by the assembly ताले council of ministers करिवे कोन पाई that is the question समने केबे करिबेनी if the government did not want to proceed with the bill it could withdraw it at any stage of consideration by the assembly समने निजे ही ताको पास करन तांदे समने ताको न ये करी कि गवर्नर को जाय कि तापरे गुपचुप रे जाय कि गवर्नर को कहबे कि देखो मते से मना करतिला कहबा पई मु एत पई लेखि कि दे दोची सेम तो करिबेनी similarly if the government wanted to repeal it repeal करिवो माने स्क्रैप करिवो रिजेक्ट करिवो after becomes an act it could have it repealed by the house similarly जदि once act हे गला ता परे ताको रिपील करिबा को चेष्टा करिवे ताले से माने कोन करिवे से माने once again कोन करिवे रिपील करिबा को चेष्टा करिवे एक्ट पाई आउतरे हाउस रे ताको पास करिबा को पड़िबो जदि तमे कहिलो जहा तमे कहिलो तमे धरो कहबो एनी जिंस को चेंज करिवो चेंज होबा पाई असेंबली तापरे गवर्नर करो नोड दरकार बिल स्टेज रे थिबो वन्स से गवर्नर करो नोड पाइला से एक्ट हे जिवो वन्स से एक्ट हे जिवो सब जिंस रे सम देखिबो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कोन हला का हे गला कैब जोटा ओला उबेर जोटा सेटा का हे गला का रा करी राबिला ता माने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल टा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हे गला जेतबेले प्रेसिडेंट सेंटर रे बा गवर्नर एक्सेंट बा नोड देई देबे स्टेट रे सेतबेले सेटा कोन हे जिवो सेटा एक्ट हे जिवो ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट कैन एडवाइज द गवर्नर टू withhold assent if he has second thoughts on the bill after it has been passed this seems to be position in the UK where the sovereign refuses assent only on ministerial advice ताले वन्स माने पास कला पर ताकू जद लागिवो ना भूल हे गला सेतबेले समान जाई करिवे सेहिति पई एई फैसिलिटीटा तयारी हेछि माने इन अदर वर्ड्स से माने निजे ताको पास करांतुनी कि पास हला पर ताको मना करंतु सदा बेले मिनिस्ट्रियल एडवाइस दरकार आ मिनिस्ट्रियल एडवाइस बा मिनिस्ट्रियल पावर टा सुप्रीम बोली से माने कहउचंदी however if says that under the Indian constitution the exercise of the power vested माने तम ऊपर दिया आइछि दायित्वटा in the governor to withhold assent may not be confined to the situation namely where को situation ने where
The Council of Ministers advises the governor to do so. ताले एमिति इंडिया रे जणा पडुनी जे इंडिया रे केवल Council of Ministers को advise रे परिबो, but the larger question is why a governor should be allowed to withhold assent when the bill is passed by the assembly. Governor काई के allow करिबो जतबेले assembly pass करची. A bill is brought before the assembly when there is some urgency about a legislation. Bill आसीबो सेतबेले जेतबेले गोटे सिचुएशन को चेंज करिया को पड़िबो कि गोटे अर्जेंसी अछि. It may be part of the policy of the elected government which is responsible to the people. ताले इंडिया रे people supreme, people करो मत सुप्रीम, ओपिनियन सुप्रीम, गवर्नर सुप्रीम बा प्रेसिडेंट सुप्रीम नुहंती आउ डायरेक्टली रिप्रेजेंट करूचंदी पीपल को इलेक्टेड बॉडीज. दिस इज व्हाट द सेंटर सेड इन केस ऑफ सेम सेक्स मैरिज कि आमे ही राइट अथॉरिटी एडजुडिकेट करबा पई कोर्ट नुए. कोर्ट कहला बिल्कुल तमे राइट अथॉरिटी करबा पई जेतबेले क्वेश्चन हबो कि कोन क्वेश्चन हबो जेतबेले क्वेश्चन हबो पर्सनल लॉज विषय स्पेशल मैरिज एक्ट विषय में करिबो आमे सेपरेट डेवलप करबा को चाहू नाउ. It may be a part of the policy of the elected government which is responsible. When a bill is passed, what authority does a governor who is an appointee of the union government have to reject it? Union government appointee gote governor se kemita ko reject kari paribo under the constitutional scheme. The governor is only a constitutional head and no real power. तार किछि रियल पावर नाही सेति पई त titular head. Then how can such a governor veto a legislative measure brought to the government and passed by the assembly? Withholding assent means the death of the bill. जदि assent करिवो जदि तमे फेरेई तांत बिल ऊपर कंसीडरेशन रिकंसीडरेशन हेई तांत पुणी आस्तांत किंतु जे ताको विथहोल्ड कर दबो ताले कोन हबो ताले बिल टा मरि गला बा डेथ ऑफ द बिल हेई गला किछि रिकंसीडरेशन हेई पालानी से गोटे स्टेलमेट हेई गला. Thus, the governor can, with one stroke of the pen, completely negate the will of the legislature and therefore negate the will of the people. Se कहउचंदी खाली गवर्नर करो इच्छा तांकरो whims रे तांकरो whimsically से कोन करि परिबे मुड्डी एई की करि परिबे से गोटे खाली मना कर देले ताले कोन हबो आउ किछि पास हेई परिबो नाही. The constitution cannot be assumed to be permitting the governor काहे ना negate कोन हेई गला bill negate heigala and similarly will of the people be negate heigala. Only the judiciary can set it right by way of a clear enunciation of the law. Clear enunciation mane clear explanation of the law joti scope ku read kariba. Issue of justiciability. Finally, it is necessary to look at the question of justiciability of the whole issue of assent by the governor. D.D. Basu, quoting judgments of the Supreme Court, says it is not justiciable. One of the judgments is Purushottam Number 3 versus State of Kerala 1962. The issue that was decided in this case was that a bill which is pending with the governor does not lapse on the dissolution of the assembly. जोटा गवर्नर को पाखरे अछि से बिल टा खत्म होउनी जेतबेले असेंबली डिसॉल्व हो जाउची काना गवर्नर कंसेंट देबे. गवर्नर जदी कंसेंट देबे सेटा एक्ट हे जिवो तापर जदी नुवा ये चाइबो से आउतरे ताको रिजेक्ट करि परिबो. But this does not judgment does not deal with the justifiability of the process of assent. Similarly, Hoest Pharmaceuticals Limited and versus State of Bihar and others 1983 deals with the power of governor to reserve a bill for the consideration of the president. The court had held that a governor reserves a bill for the consideration of the president in exercise of his discretion. तमे कौन करि परिबो प्रेसिडेंट को पाको पठै परिबो बट जहां भी तमे करिबो किछि मूवमेंट अछि तमे जदी ना सेपटे पठैबो ना एपटे करिबो माने तमे जदी ना हां करिबो ना ना करिबो भाई आग तक जदी मना करिबो से एटलीस्ट पाठ पढिबो नले आउ का को देखिबो तमे जदी हां करिबो ताले मैरिज हबो तमे जदी कहबो कता हवा वी विल डिस्कस से कोन होई जिवो स्टेलमेट रे रहि जिवो क्वेश्चन टा ना हो ना नहीं से पिला करिवो कोन. The court cannot go into the question of whether it was necessary for the governor to reserve the bill for the consideration of the president. Thus, this case too does not deal with the justiciability of assent. The issue that is agitating state governments is the indecision on the part of the governor. Tale decision nahi non-decision ba indecision on the part of the governor on a bill passed by the assembly. So on the question whether the government can challenge the inaction of the governor in a court of law, the answer seems to be affirmative. Tale answer hochi affirmative. Kahinki na governor challenge
So on the question whether the government can challenge the inaction of the answer seems to be affirmative. Government challenge kari paribo governor ko decision ko. The framers of the constitution would never have imagined the governors would sit on bills indefinitely without exercising any of the options given in article 200. ताले सेमाने भी भाभी पारनथले एमती नुआ नुआ छला गवर्नर आसीबे. This is a new development which needs new solution within the framework of the constitution. So it falls to the Supreme Court to fix a reasonable time for governors to take action on a bill passed by the assembly in the largest interest of federalism in the country. Out definitely federalism of the country upare semanku larger interest re semanku kon kariba ko padibo gote time frame fix kariba ko padibo tato adhika time jodi tame bill upare indefinitely sit karibo tale definitely kon haba Supreme Court ko interpret kariba ko padibo reinterpret kariba ko padibo exactly आजिर आर्टिकल भी एटा थिला कि सुप्रीम कोर्ट कौन कहचंदी ए आर्टिकल टा यार कंटिन्यूएशन रे पढ़ी दबो डेफिनेटली अधिका बुझिबो. आजिर सुप्रीम कोर्ट विषय भी आर्टिकल थिला. I just glanced through somewhere. टिके देखी दउची रहि जाओ दौड़ी की जीवनी. सुप्रीम कोर्ट ऊपर भी आर्टिकल गोटे कोडी अछि देखि दबो. Somehow I am not getting right now. कोर्ट कहूची कि एटा गवर्नटोरियल पावर रो एम्पर करूची हबो नाही. पिला माने मन रखिबो ADA 24/7 ओडिया सबुड बढ़िया सदा बेले तम संगे थिबो जेतळे जाय तमे एग्जाम क्लियर करिनो. सब दिन 8:10 रे हमर न्यूज एनालिसिस रो क्लास हबो निश्चित देखिबो. एंड हमर बुधवार गुरुवार शुक्रवार संध्या 6 रे भी हमर क्लास हबो. पिला माने मन रखिबो the way I see it, if you जदि रेनबो दरकार लाइफ रे रेन को तो वर्षा को तो डेफिनेटली फेस करबा को पड़िबो. बिना वर्षा रे ना अनुभव आसीबे ना तमे निजे किछि ये करबो. पिला माने सबदि पई कोड यूज करबो Y292. हमर ऐप रे बहुत सारा फीचर्स अछि निश्चय डाउनलोड करबो. प्रीमियम स्टडी मटेरियल करंट अफेयर्स जॉब अलर्ट सब्जेक्ट वाइज क्विजेस डेली क्विजेस मैगजीन पावर कैप्सूल वीडियोस नोट्स एंड आर्टिकल्स. Thanks a lot for watching. Follow me at ADA 24/7. Stay connected with India's most popular test platform. Stay focused and motivated. Simplify kariba competitive preparation ko use kariba code Y292 for 17% discount. Premium study material, current affairs, job alerts, subject wise quizzes, daily quizzes, magazines, power capsules, videos, notes and articles achi. Extra 1% discount coin ru paiba pai eta ko kariba. Like, comment, share au subscribe kariba ko bhulibo nahi. Ame puni kali meet kariba another round of interesting, informative and interactive news session. Till then, bye bye. God bless you all. Don't forget to like, comment, share and subscribe. All the very best. God bless you all.